हेलो, वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। और हमने जो अपनी पहली वीडियो डाली थी इससे पहले, उसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को डिस्कस किया है। और उसी पे बेस्ड मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम और फार्मूला था एक, जो कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मतलब किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ और उनके एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये एक वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। और अब उसी में जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.2 को, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम है उसके एक दो एग्जाम्पल करेंगे, जो लाइक दिस फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन वी हैव टू प्रूव इट। सो इस पे हम थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, इस सारे को देखेंगे, इसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल लेकर फर्स्ट सेकंड में हम इसको ऐसे करेंगे। ओके, सो starting with first question, they had asked about they are asking about express each number as a product of its prime factor। ठीक है, सो ये जो नंबर है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। लाइक 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 27, ओके, 235 and then 5 sevens and then 7। okay, so what will be the product of their prime factor is 2 into 2 into 5 into 7, so and 1, so this is the prime factor of that 140। Similarly, the prime factor of 146, try with 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 threes are 6, okay, 2 nines are 18। Basically what we are doing, divide the number with 2, okay, 2 sevens are 14, 2 eights are 16। If that number is not divisible with 2, move with 3, then 5, then try with 7, then try with 11, but you have to try with the prime number, okay. And generally we see what is the last digit of that number, like 0, 6, it might be divisible with 2, 5 or 6, 2 or 3, like here it is 3825, so possible, it may be possible it will be divisible by 3, if not then try with 5, and surely it will be divisible by 5 then. Here as I had shown, we had tried with 3, so it is divisible and it will give you the 1 2 1 5. Now the prime factor, again move with division, we get the prime factors like this, okay. So now try for this two number with yourself, and moving with the second question। here उन्होंने पूछा है कि find the LCM and HCF of the following pair of integer, okay, there are two integer this and this, and verify that LCM into HCF is equal to the product of two numbers। Means this relation you have to verify while calculating the LCM of these two number and HCF using the prime factor method, okay। So start with the first question, like first we had हमने prime factor किया इसका 2 and we find the HCF, and now what is the prime factor of 26 is 2 into 13, okay, into 1, and similarly prime factor of this 7 and 13 is means that 91, prime factor of 91 is 7 into 13 into 1, so common of them is 13 and 1, so HCF of that 26 and 91 is 13। Now to find the LCM of 26 and 91, let us find, it is like 26 and 91, okay, let me show you 26 and 91, so 2 and 91, okay, then again 2 13, now it will be not divisible by 2, then try with 3, it is not divisible by 3, then try with 7, yes it is divisible by 7, it will be 13, and then it will be 13 1 the 13, okay. So now product of these numbers 2 7 and 13, 2 into 7 into 13, what will we get, 182,
Now 182 and multiply 13 should be equal to the 26 into 91. Okay, because what is this? SCF is 13, LCM is 182, and multiplying these two numbers 13 into 182 we get 2366. And similarly the product of that two number, like the product of two number means 26 and 91, what we get? 2366. Okay, now let us do the prime factor of 8, 9, 25. Okay, the prime factor of 8 will be 2 into 2 from here. Okay, do this with yourself at home. And because if I start doing this prime factor in this video, it will be long video, so and it will be boring for you also. So it will be beautiful if you do with yourself. अपने से खुद से इसको करो, ज़्यादा सही रहेगा. So 9 का क्या हो जाएगा? 3 into 3 into 1 और 25. So there is no common value, but actually there one is the common. So HCF of 8, 9, 25 is 1. Okay. Now to find the LCM, I already calculated this and try to do with yourself at home. Okay. So now what we get? 2 into 2 into 3 into 3 into 3 and calculated the product 1800. Okay. So now next question is what? Question 4. In question 4 they had given the HCF, means HCF of two number 306 and 657, and that is 9. They had given the HCF of two number and given that two numbers also, A and B. Okay, and they asked to find the LCM. हमको LCM निकालना है उन दो नंबर्स का. तो we have the formula, we know that what कि HCF of that number and LCM of the numbers is equal to the product of that numbers. So क्या करना है आप LCM निकालने के लिए? Product of that number divide by the HCF of the numbers. Okay, मतलब जो HCF है उससे डिवाइड कर दो उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के. Similarly, A is what? Here A is 306 and B is 657. 306 and B is 657. Okay. So now product of this number and what is the SCF? Here SCF is given 9. So divide and multiply. We will get the LCM of that two number. Okay. It is asked in the question 4. Let us move towards the question 5th. We have done this. Now we are here. Check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. Okay. Basically what they asked is if 6 to the power n, that is n is some natural number like 1, 2, 3, 4 dot dot dot. Okay. So suppose 6, 1, 2, 3 ऐसे हमने किया, तो what will be 6? This will be 36. This will be. So they had asked कि ऐसे हम अगर पावर बढ़ाते जाएं 6 के, तो क्या जो 6 की इन डिजिट है वो 0 आएगी? तो यहाँ पे हम लोगों ने कर रहा है 0 नहीं आ रही. ओके, लेकिन अगर किसी के इन डिजिट में 0 आ रहे हैं तो उनके प्राइम फैक्टर में क्या होगा? सपोज 10 है, 100 है, तो इसको क्या लिखोगे? 2 into 5. इसको क्या लिखोगे? 100 का प्राइम फैक्टर देखो क्या है? 250, 25, 5, 5. Okay, so 2 into 2 into 5 into 5. Okay, so जिनके इन डिजिट में 0 आएगा उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 प्राइम फैक्टर होगा उनका. ठीक है, जिनके इन डिजिट में 0 आता है. सो नाउ व्हाट वी आस्क्ड अबाउट कि 6 के पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 to the power n, क्योंकि भाई 6 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 into 3 होगा. सिंपल सी बात है. 2 3 6, 3 1 3. ओके,
तो पावर में ये 6 को मैंने ऐसे कर दिया और इसको ऐसे ब्रेक करके लिखा, अब 2 to the power n into 3 to the power n. Okay, so what we get here कि जो 6 का प्राइम फैक्टर है उसके में न तो 5 नहीं है एज ए प्राइम फैक्टर, तो अगर उनके प्राइम फैक्टर नहीं तो इसका मतलब ये है कि 6n का जो पावर होगा वो डज नॉट एंड विद डिजिट 0. ओके, सो जिनके भी डिजिट एंड विद 0 होंगे प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए 2 और 5, तो इसमें नहीं है, इसलिए ये 6 पावर n कभी भी डज नॉट एंड विद डिजिट 0. ओके, सो बेसिकली हियर आई हैड सॉल्व्ड इट फॉर यू कि अगर the numbers ending with 0 have a common factor, क्या 2 और 5, so it shows that for a numbers ending with 0 must have 2 and a 5 as a prime factor. ठीक, तो यहाँ पे ऐसे हमने लिखा और 2 to the power n 3 to the power n, so 6n don't have a 5 as the factor, therefore 6n not in the 0 for any natural number. Okay, next question is 6. Explain why this two number and 7 into 11 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. Okay, now remember as I already told in my video, कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 1 के अलावा और भी फैक्टर हो, एक से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 1 और इटसेल्फ के अलावा और किसी भी नंबर से वो डिविजिबल भी हो, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं. ठीक है, ये बात याद रखना क्या कि 1 और इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब खुद से डिवाइड जो हो जाए, खुद से और एक से जो डिविजिबल है, उनके अलावा अगर वो किसी और से भी डिविजिबल है तो वो क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर होंगे. ठीक है, तो अब प्रूव करने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ से 13 कॉमन ले लो, 7 इंटू 11 13 और 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है मेरे पास 7 इंटू 11 प्लस 1. ओके, तो 13 और ये 77 प्लस 1 13 into 78. Okay, now we will do the factorization of that 78. So factorization of 78, 2 into 13 into 2 into 3 into 13. सो यहाँ पे जो हमको मिला वो एक से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है सिंस इट हैज मोर फैक्टर्स देन 1 एंड इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सपोज करो एक प्लेग्राउंड है. ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक प्लेग्राउंड है सर्कुलर पाथ में, जिसमें सोनिया और रवि दौड़ रहा है. ओके, तो सोनिया को जो समय लग रहा है उस ग्राउंड को कवर करने में 18 मिनट्स लग रहा है और रवि को जो समय लग रहा है 12 मिनट्स लग रहा है. ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा समय होगा या किस टाइम बाद, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है. ओके, और रवि तेज थोड़ा दौड़ रहा है तभी उसको कम समय लगा है, तो एक समय बाद आएगा ना कि रवि सोनिया को पकड़ लेगा. तो जहाँ पे वो एक बार मिलेंगे, सपोज करो जैसे सोनिया धीरे धीरे यहाँ पहुंची है, रवि यहाँ पहुंच गया है, फिर अभी सोनिया यहाँ पहुंच रही, रवि यहाँ पहुंच रहा है, फिर सोनिया यहाँ पहुंच रही है कहीं, फिर रवि, कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ दोनों मिलेंगे. तो हमसे पूछा है कि क्या टाइम के बाद, मतलब किस समय पे दोनों एक साथ मिलेंगे, तो जहाँ पे दोनों मिले, मतलब to find that time we have to calculate the LCM of that 18 and 12. जहाँ पे मिलेंगे उसको निकालने के लिए हमको 18 और 12 का LCM निकालना है. Now let us find the LCM of this 18 and 12. 2 9 is 18, 2 6 is 12, 2 9, 2 3 is 6, 3 3 is 10.
here product will be 2 into 2 into 3 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 3s are 36. So after 36 minutes, so Sonia and Ravi meet after 36 minutes. After 36 minutes, they will meet. Okay, so this is the final whole solution of this exercise 6.1.2. So if there is any doubt or you don't understand any question or some other question apart from this exercise, you can ask me. मैं उसका solution अपलोड करूँगा. You can comment me on the comment section. और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप हमसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा. मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. थैंक यू.